वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Inshallah, we begin from verse number 25. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum khatarun wa la zillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. And Allah invites towards the abode of peace, Dar es Salam. Dar es Salam means abode of peace. And He guides whomever He wishes ila sirati mustaqim, towards the path straight. For those who do good shall be the best and even more, and not shall cover their faces, darkness, and neither disgrace. Those are the companions of paradise, they in it shall abide forever. And those who earn evil, jaza'u sayyi'atin bimisliha, the recompense of evil, the like of it. And will cover their face and will cover them disgrace. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ, and will cover them disgrace. Not shall be for them against Allah min asim, any defender. As if had been covered their faces qitam min al-layli muslima, with pieces of the night dark. Those are the companions of fire. Hum fiha khalidun, they in it shall abide forever. और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ, और वो हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। जिन लोगों ने नेकियां किए उनके लिए भलाइयां हैं और मजीद और भी, और नहीं छाएगी उनके चेहरों पर कोई सियाही और ना जिल्लत। यही लोग होंगे जन्नत के साथी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग कमाए बुराई, बदला बुराई का उस जैसा, और छाएगी उन पर जिल्लत। नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई बचाने वाला। गोया के छा गई उनके चेहरे पर अंधेरी रात के टुकड़े। यही लोग आग के साथी होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुला रहा है। सलामती का घर का मतलब जन्नत, वो राहत वाला मुकाम, वो अब्दी नियामतों वाली जगह। So Allah is inviting you towards the abode of peace. And what is that? Paradise. An eternal life of bliss, an eternal life of happiness, an eternal life of enjoyment. And Allah guides whomever He wishes to the path straight. Whom does Allah guide? He guides only those people who seek guidance. जो लोग हिदायत के तलबगार हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत देगा. And those people who are not interested in seeking guidance, Allah too would not compel them. और हिदायत मिलेगी कहां से? कुरान ही से मिलेगी. Further Allah says, for those who did good deeds, जो लोग नेकियां किए दुनिया में, आखिरत में उनके लिए भलाइयां ही भलाइयां हैं, और मजीद अल्लाह और भी उनको देगा. और तफसीर में आता है ये अल्लाह की दीदार नसीब होगी. So for those people who did good deeds,
They'll have the best rewards from Allah and even more. And that even more, Tafsir says, it refers to the face of Allah which they will see. May Allah include us among them, Ameen. So Allah says their faces will be glowing with brightness. Wujuhi yawmaizin nazira. Some faces on that day will be glowing, will be radiant, will be bright. उस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, चमकते होंगे. But those people who are going to go to Jahannam, their faces will be dark, will cover their faces ignominy or disgrace. For they are going to be the people of the Jahannam, where they'll abide in it forever. जन्नत को जाने वालों के चेहरे चमकते होंगे, तरोताजा होंगे, लेकिन जो लोग जहन्नम को जाने वाले, उनके चेहरे स्याह होंगे, जिल्लत उनके चेहरों पर छाई हुई होंगी, और ये लोग होंगे आग वाले, जहां पे वो हमेशा रहेंगे. वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फज़य्यलना बैनहुम व क़ाला शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफ़त वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून. And the day we shall gather them all, then we shall say to those who associated partners, Makanakum, stay in your place, you and your partners. Then we will bring about separation and will say their partners, not you to us worshipping. So sufficient is Allah as a witness between us and between you. Indeed, we were from your worship surely unaware. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. There will be tested every soul what it had done in the past. Waruddu ilallah, and they will be brought back towards Allah, their true Lord. Wazalla anhum, and will vanish from them ma kanu yaftarun, what they used to invent lies. और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन सबको, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, तुम रुक जाओ, तुम और तुम्हारे शुरका. फिर हम जुदाई डाल देंगे उनके दरमियान और कहेंगे उनके शुरका, नहीं थे तुम हमारी इबादत करते, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, बेशक हम थे तुम्हारी इबादत से जरूर नावाकिफ. वहीं जांच पड़ताल की जाएगी हर नफ्स की जो कुछ उसने किया था, और वो लौटा दे जाएंगे अल्लाह की तरफ जो उनका सच्चा मौला है. They will all be returned towards Allah, their true Lord. और गुम हो जाएंगे उनसे जो कुछ वो झूठ घड़ते थे. क़यामत के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा और अल्लाह मुश्रिकों से फरमाएगा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, तुम भी रुको, और जिनकी तुम परस्तिश करते थे या पूजा करते थे या इबादत करते थे, उनसे भी कहा जाएगा तुम भी रुक जाओ. फिर अल्लाह फरमाता है कि हम जो है उनके दरमियान फूट डाल देंगे, जुदाई पैदा कर देंगे, उनके जो रिश्ते आपस में थे वो कट जाएंगे. फज़य्यलना, then we'll bring about separation, division, partition and hostility. ये तमाम चीजें इसमें आते हैं. तो हम उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे, दुश्मनी डाल देंगे, और कहेंगे उनके शुरका उन लोगों से जो इनकी बंदगी कर इबादत करते थे,
नहीं थे तुम हमारी इबादत करते, अगर तुम हमारी इबादत करते थे तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। हमने कभी नहीं कहा तुमसे कि हमारे मरने के बाद तुम हमारी इबादत करना। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफी है हमारे लिए फैसला करने करने के लिए हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। और अगर तुम इबादत भी करते रहे तो हम इससे बिल्कुल नावाकिफ थे। तो उन मुश्रिकों की जांच पड़ताल की जाएगी जो कुछ उन्होंने शिर्क किया था इससे पहले, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गिरफ्त में आ जाएंगे। और वो तमाम चीजें जिन्होंने जो 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 इन लोगों ने घड़ा था कि फला हमारी सिफारिश करेंगे, कि फला जो है हमारी जन्नत में पहुंचा देंगे, ये तमाम इनके बेहुदा घड़े हुए तमाम फिलॉसफीज और आइडियोलॉजीज और थियरीज सब गुम हो जाएंगे। उन तमाम जो है उनके गुमान, उनके सोच सब जो है गुम हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम चीजें इनके खुद के घड़े हुए झूठ थे। So Allah will expose the polytheists thoroughly on the day of Qiyamah, thoroughly. Today, those people who associate partners with Allah and who commit shirk, they think that whom they are worshipping will come to their rescue on the day of Qiyamah. But those people whom they used to worship will be taken unawares. They will be shocked to know that after they had died, that the people behind were worshipping them. They will say, sorry, we did not know that you were worshipping us. We are totally unaware of this because we had transited to a different world altogether. We had not been aware of what was going on in this world after we died. हम जब मरने के बाद हम दूसरी दुनिया में जो है मुंतकिल हो चुके थे, इसलिए हम इंतकाल बोलते हैं। जब कोई किसी की मौत लायक हो जाता है हम कहते हैं इंतकाल। दैट मीन्स they are transiting from one life to another life, and that's the alam barzakh. And the third final destination is Qiyamah. So they will say, sorry, we are shocked to know that you were worshipping us. We had never said any such thing to you before we died. So Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient witness for us, between us and between you. We were totally unaware that you were doing all this. So Allah subhanahu wa ta'ala will totally scrutinize the entire process and expose the polytheists, and they will never be able to escape from Allah subhanahu wa ta'ala. And all those false theories which they had invented on their own will prove a disaster for them, will prove a shock for them, and they will all vanish. ये है हकीकत। काश लोग इस बात को समझ जाते, संभल जाते और इस्लाह कर लेते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होकर इस दुनिया में भी रहते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा क़यामत के दिन। If only the people were to realize the mistake and the heinous crime of shirk which they are committing, and reform their lives and seek pardon and repentance before they die, in order that Allah may grant mercy to them. Otherwise, their matter is very, very dangerous. May Allah protect all of us from any element of shirk whatsoever in our lives until our last breath. Ameen ya Rabbal Alamin. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Khul is actually say, but you can say ask because it's followed by a question. Ask, who provides for you from the sky and the earth, or who has the control over your ears and eyes, or over your hearing and sight, and who is the one who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living,
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, and who disposes the affairs. Then soon they will reply or answer, Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, then ask, will then not you fear? ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ, so this is Allah, your true Lord. Then what remains after truth except Zalal, error? Then where are you getting? Tusrafun, turned away. Thus shall be justified the word of your Lord upon those who were defiantly disobedient, that they not shall believe. पूछिए, कौन रिज़्क़ देता है तुम्हें आसमान और ज़मीन से, या कौन इख्तियार रखता है तुम्हारे समात और बसारत पर, और कौन निकालता है जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को निकालता है मुर्दे को जिंदे से, और कौन तदबीरें करता है कामों की, तो जरूर वो जवाब देंगे अल्लाह। फकुल अफला तत्तकून, फिर पूछिए, फिर क्या नहीं तुम अल्लाह से खौफ करोगे? फिर यही है अल्लाह तुम्हारा सच्चा मौला, तुम्हारा सच्चा रब। फिर क्या रह गया हक के बाद सिवाय गुमराही के? फिर कहां तुम फिरे चले जा रहे हो? इसी तरह साबित हो चुकी बात आपके रब की उन लोगों पर जो नाफरमानी करते रहे कि वो नहीं ईमान लाएंगे। Very, very powerful questions. Allah is pinning them to the wall. They have absolutely no answer except to acknowledge the fact that nobody except Allah who can do all this. First question, कौन तुम्हें रिज़्क़ पहुंचाता है आसमान और ज़मीन से? Who is providing you from the sky and the earth? Answer is of course Allah. Number two, who is having control over your hearing and sight? Again the answer is Allah. कौन इख्तियार रखता है तुम्हारे समात और बसारत पर? जवाब वापस अल्लाह है। Who is bringing out from the living from the dead and the dead from the living? Again the answer is Allah. फिर कौन तदबीरें करता है तमाम इस कायनात के अमर और उसके हुक्म को? जवाब है वापस पे अल्लाह। फिर अल्लाह पूछता है, फिर क्यों तुम अल्लाह से डरकर जिंदगी नहीं गुजारते हो? What is preventing you from fearing Allah when He is the one who has total control over this universe, and every little bit what He has created in this universe is subservient to Him. He has total control over it. Then why you as human beings are not prepared to fear Allah? For Allah, whatever He has bestowed on you in this world, you mean to say He will not question you as to how did you utilize them? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात जिसने तमाम नियामतों को निछावर किया है तुम पर, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तुमसे सवाल नहीं पूछेगा कि तुम इसको कैसे इस्तेमाल किए हो? उस क़यामत के दिन से डरो जब अल्लाह ये सवाल तुमसे पूछेगा। So fear the day of Qiyamah when Allah will ask this fundamental question as to how did you utilize the favors which I conferred upon you. So this is only Allah subhanahu wa ta'ala, your true Lord. But if you reject the truth, in spite of this being conveyed to you so categorically, then what remains after this is only error. And where does error lead you? To Jahannam. So where are you getting turned away? Kahan tum phire chale ja rahe ho? And such people who are utilizing the favors of Allah and who are living and enjoying their life in this world by the blessings of Allah, when such people are still committing an act of shirk, associating partners with Allah, and being ungrateful to the favors which Allah bestowed on them, then Allah subhanahu wa ta'ala says, for such people, Allah has already decided that these people are not going to believe. And when they are going to be deprived of Iman, then their sure abode is Jahannam. May Allah protect all of us. Ameen. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. Ask, هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ, is there
any of your partners who originates the creation, summa repeats it. Say originates the creation, then he repeats it, then waiting, turned away. पूछिए, क्या है कोई तुम्हारे शुरका में से जो इब्तिदा करे पैदाइश की, फिर उसका इयादा करे या दोबारा पैदा करे उसको? कह दीजिए अल्लाह इब्तिदा करता है पैदाइश, फिर उसका इयादा करता है या दोबारा उसको पैदा करता है। फिर कहाँ तुम बहके चले जा रहे हो? कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ि कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहद्दी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्ना ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शै'a इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यफ़अलून. Follow this translation of these verses carefully. Very powerful Arabic language at its almost zenith. Very powerful verses. Just follow the translation carefully. Ask, is there any of your partners who can guide towards the truth? Answer, of course, is no. Say Allah guides to the truth. Is then he who guides to the truth more worthy that he should be followed, or the one who does not find guidance except that he be guided? Fama lakum, then what is the matter with you? Kaifa tahkumun, how do you judge? I repeat the translation of this verse once again, follow it carefully. Ask, is there any of your partners who can guide to the truth? Say Allah guides to the truth. Is then he who guides to the truth more worthy and yuttaba, that he should be followed, or the one who does not find guidance except that he be guided? Fama lakum, what is the matter with you? What for you means what is the matter with you? Kaifa tahkumun, how do you judge? And not follow most of them except zanna, conjuncture. Verily conjuncture not can avail against truth anything. Verily Allah knows well of what they do. पूछिए, क्या है तुम्हारे शुरकाओं में से कोई जो हिदायत करे हक की तरफ, जो रहनुमाई करे हक की तरफ? कह दीजिए अल्लाह हिदायत देता है हक की तरफ, या अल्लाह रहनुमाई करता है हक की तरफ। फिर क्या वो जो रहनुमाई करे हक की तरफ ज्यादा लायक है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो नहीं हिदायत पा चुका सिवाय के हिदायत दी जाए? क्या हो गया तुम्हें, कैसे तुम फैसले करते हो? और नहीं पैरवी करते अक्सर उनमें से सिवाय गुमान की। बेशक गुमान नहीं फायदा दे सकता हक के मुकाबले में कुछ भी। बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं. Another very powerful question from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saying the Prophet ask these polytheists, ask these mushrikeen, is there any of your partners who can guide to the truth? Can they tell you what is right, what is wrong, what is good, what is bad, which is the path that leads to Jannah, which is the path that leads to Jahannam? Can they take any decisions of this kind? The answer is definitely no. It's only Allah subhanahu wa ta'ala who guides to the truth. So Allah subhanahu wa ta'ala says, then is the one who guides to the truth, he is definitely more entitled and worthy that he should be followed, obviously. And the one who does not find guidance, except that he also is dependent on guidance, will you follow such a person? Foolishness. Allah ही रहनुमाई करता है हक की तरफ, वही इस बात पर पूरी कुदरत रखता है, लायक है कि वही हमें हिदायत दे सकता, क्योंकि उसी ने हमको पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, तो वही जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. हिदायत अल्लाह ही से मांगी जाती है और अल्लाह ही के इख्तियार में है हिदायत जिसको चाहे दे. We need to seek guidance only from Allah because He is only worthy and entitled to guide. But if you are going to seek guidance from any other source besides Allah and the word of Allah, then you will go astray. This is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अगर किसी ने
कुरान के अलावा किसी और जरिए से हिदायत हासिल करने की कोशिश करे तो वो गुमराह हो जाए। The guidance of Allah is nothing but the word of Allah, which is the Quran. But what do most of the people do? They follow conjuncture. What does mean of conjuncture? Assumptions. मैं समझता हूँ ऐसा, मेरे तजुर्बे से मैं ये फैसला करता हूँ, या मेरे खानदानी जो है रस्म और रिवाज का यही तरीका है, मेरे बाप दादा ने ऐसे ही किया। These are all assumptions. These are all theories. Everything is hypothetical and nothing is backed with evidence. ये तमाम मनगढ़ंत चीजें हैं जिसको जन कहा जाता है। जन का मतलब assumptions, conjuncture, गुमान। और गुमान और हक are poles apart. Conjuncture and truth are poles apart. They are absolutely opposite to one another. And conjuncture cannot take the place of haq at all. Forget, take the place, cannot even come near. So Allah subhanahu wa ta'ala says, He knows everything, whatever you're doing. You're committing shirk, you're not committing shirk, you are strengthening your relationship with the Quran, which is the book guidance, or not. You're seeking guidance from the Quran or from any other source. Everything Allah knows. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. And not is this Quran, follow the translation again carefully, and not is this Quran but a revelation from Allah. And not is this Quran but a revelation from Allah, and it cannot be fabricated. And not it is a fabrication. And not is this Quran but a revelation from Allah which cannot be fabricated or is not fabricated. And but it is also a confirmation to what before it and an explanation of the book La Reba Fi, no doubt in it, from the Lord of the worlds. Or do they say he has fabricated it? Say, then bring a chapter the like of it. Wad'u manistatatum, and call whomever you can from besides Allah, in kuntum sadiqin, if you are truthful. और नहीं है ये कुरान अल्लाह के वही के अलावा कि वो घड़ लिया गया हो, लेकिन वो तस्दीक करती है जो उसके आगे आई और तफसील या बयान करती है किताब, नहीं कोई शक उसमें रब्बुल आलमीन की तरफ से। क्या वो कहते हैं उसने उसको घड़ लिया है? तो फिर ले आओ एक सूरत उस जैसी और बुला लो जिन जिन को तुम चाहो अल्लाह के अलावा, अगर हो तुम सच्चे। This Quran is a revelation from Allah. It has been sent down by Allah. There's absolutely no doubt that it is a revelation from the Lord of the worlds. Unlike what you stupid people are saying that it is a fabricated book. This is absolute rubbish talk what you are uttering. ये सिर्फ बकवास है जो तुम कहते हो। ये कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक वही है और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर तुम कहते हो कि अल्लाह के रसूल ने नाउजुबिल्लाह इसको घड़ लिया है तो ये एब्सोल्यूट बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि अल्लाह के रसूल उम्मी थे, यतीम थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तुम्हारे दरमियान वो एक उम्र गुजार चुके हैं, तुम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो। अच्छा चलो, अगर ये भी तुम्हारे तरफ से एक दावा है, फॉर आर्गुमेंट सेक, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े अरबी के माहिरीन हैं,
इनसे कहो या तुम सब मिलकर एक सूरत कुरान जैसी ले आओ, देखेंगे। अरे उसकी फसाहत, उसकी बलागत, उसकी बदात, उसकी खूबसूरती, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, उसके यूसेज ऑफ वर्ड्स एब्सोल्युटली तुम्हारे रीच में ही नहीं है। तुम उसके करीब भी नहीं जा सकते हो। इसके कैलिबर और स्टैंडर्ड, इसके स्टैंडर्ड और कैलिबर के करीब तक नहीं जा सकते हो। तुम क्या एक सूरत बनाकर ले आओगे, एक आयत भी बनाकर नहीं ले आ सकोगे। So Allah subhanahu wa ta'ala is throwing an open challenge before them. This Quran is a revelation from Allah, from the Lord of the worlds. It's not a book that is fabricated. And your accusation that Prophet Sallallahu has fabricated it is absolute trash and rubbish. It has no base at all. There's no meaning in what you're speaking. You're contradicting your own statement where you said that Prophet is Al-Amin and As-Sadiq. And when now he's presenting the Quran, you say he's fabricated. When the fact of the matter, which you already know, is that he was an ummi, an illiterate, he was an orphan, he was never exposed to formal education or learning. And okay, for argument's sake, you say he has fabricated it, then come on. You have such high caliber scholars of Arabic and people who have mastered the language of Arabic, of which you boast and brag. Come on, ask them to produce one chapter the like of the Quran. Forget one chapter, you fellows cannot even produce one verse to bring it to the standard of the caliber of the Quran. And we know that the best of the poets at that point of time, who were specialists in the Arabic language, whose poets used to be hung on the walls of the Kaaba, had to hang their heads in shame when they saw the power of the Quran, the caliber of the Quran, the language of the Quran, the structure of the verses of the Quran. They had to hang their heads in shame and remove those couplets and poets from the walls of the Kaaba. And they said, now it's absolutely not possible for us to compete with a book of this standard. And this challenge which Allah has put forth will remain until the day of Qiyamah. And many who have attempted have failed miserably. Inna nahnu nazzalnahu zikra wa inna lahu lahafidun. We are the one who revealed the Quran. We will safeguard it. We will safeguard it. Nobody will be able to do anything to corrupt the Quran or the words of the Quran. And Allah will keep it in a pure and pristine form until the day of Qiyamah. This is the promise of Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah never breaks his promise. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Nay, they denied with what not they encompassed of its knowledge, while not yet has come to them its true reality. Thus denied those from before them. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Then see how was the end of the wrongdoers. And among them some who believe in it, and among them some who do not believe in it. And your Lord knows best the mischief makers. बल्कि उन्होंने झुटलाया जो नहीं इहाता किया उन्होंने उसका इल्म, और नहीं आई उनके यहाँ उसकी असल अभी हकीकत। इसी तरह झुटलाया उन लोगों ने उनसे पहले, फिर देखो कैसे हुआ अंजाम जालिमों का। और उनमें से कुछ जो ईमान लाते हैं उस पर, और उनमें से कुछ जो नहीं ईमान लाते उस पर। और आपका रब खूब जानता है फसाद करने वालों को, फसाद मचाने वालों को। These people outrightly rejected the Quran. These people outrightly rejected the Quran. They did not even try to comprehend or understand what is the Quran conveying to them. They did not acquire the knowledge of the Quran. And now only the revelations have started. They have not even waited for the complete fulfillment of the entire Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala says, on account of their forthrightly rejecting the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will put them in the category of those people who denied the Quran and are among the mischief makers, mufsideen. तो ये वो लोग हैं जो ना कुरान के इल्म को हासिल करने की उन्होंने कोई इक़दाम उठाए,
और ना अभी कुरान पूरी तरह से मुकम्मल भी नहीं हुआ, उसकी पूरी हकीकत भी नहीं मालूम नहीं, और इन्होंने यूं ही उसको झुटला दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये अना की कैफियत थी, ये उनके अंदर एक जिद थी। दिस वॉज अ काइंड ऑफ एन ईगो इनसाइड देम, अ काइंड ऑफ a rigidity inside them. They were not prepared and open their minds and contemplate and comprehend and reflect upon the verses of the Quran. So Allah says, there are some among the people who believe in it. There are also some who disbelieve in it. And Allah knows all those people who, on account of their mischievous nature, rejected the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala will hold them accountable on the day of Qiyamah. May Allah help us to strengthen our relationship with the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala help us and enable us to seek guidance at every step of our lives from Allah subhanahu wa ta'ala through the book of guidance, namely the Quran. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to always stay connected with the Quran, to seek guidance from the Quran, and to ask anything small or big only from Allah, because He is the creator of the universe and He is the one who provides everything for us. So therefore, we need to be grateful to Him for all these blessings which He conferred on us, and help us to utilize these favors in a manner as Allah and His Messenger have told us. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Looking forward to seeing you inshallah tomorrow with the rest of the verses. Jazakallahu khair. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.